Hello everyone. Today we are going to start a new chapter. Okay. Life process अपने अपने बहुत बड़ा चैप्टर था, उसके अंदर सब पार्ट्स में आपको समझाया है। 4 वीडियोस पे लाइफ प्रोसेसेस कवर अप किए हैं। लाइफ प्रोसेस और भी होते हैं, राइट? जब क्लास 11 में यही हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर इसमें और भी डिविजन हो जाते हैं। तो 7 लाइफ प्रोसेसेस 11 में होते हैं और एक लाइफ प्रोसेस रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स with respect to plants and humans, वो 12 में होता है। तो लाइफ प्रोसेस का there, तो 4 मेजर लाइफ प्रोसेस जो हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में कवर अप किए हैं, that is nutrition, then respiration, transportation and excretion. तो जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, उन सबके पीछे कंट्रोल इज मस्ट, रेगुलेशन एंड टू हैव अ चेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी जो ये वाला जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात है, राइट? तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन 11th क्लास का मर्ज टॉपिक है, इसमें प्लांट्स का भी है, एनिमल्स का भी है, एंड एनिमल्स में भी 2 डाइवर्जन्स होते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के। एक होता है न्यूरल सिस्टम, ठीक है, और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। तो यहाँ पर हम पहले प्लांट्स का कंबाइंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टडी करेंगे। प्लांट्स का एक सेपरेट हमारा वीडियो होगा और एनिमल्स का हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, राइट? तो डेफिनेटली आज की क्लास में एनिमल का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पर्टेनिंग टू ह्यूमन बीइंग्स स्टार्ट कर रही हूँ। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर तो क्लास 10 में इसके अंदर हमारे 3 सब पार्ट्स हो जाते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो जाएगा हमारा। इंट्रोडक्शन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इंडिविजुअल। कॉम्प्लेक्सिटी की क्या बात करें? अगर एक ऑर्गेनिज्म सिंपल भी है तो उसके वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ फीचर होता है रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस मींस कि अगर उस प्लांट को कुछ भी या एनिमल को या ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो सिंपल ऑर्गेनिज्म होना हो, दे ऑल रिस्पॉन्ड टू वेरियस चेंजेस अराउंड देयर, ठीक है? चेंजेस अब जैसे ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होता जाता है, उसकी रिक्वायरमेंट पर्टेनिंग टू environment inside the body, outside the body, दोनों तरह से उसको रिस्पॉन्स देना ही होता है, ताकि वो अपने अंदर और आसपास के होने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को अडैप्ट कर सके, अपने आप को रिस्पॉन्ड करे। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, इट विल लीड टू मेजर इंजरीज एंड डैमेज और प्रेडेशन। तो इसीलिए प्रोटेक्शन के लिए और हमेशा चौकन्ना रहने के लिए एक और इंटरनल ऑर्गन्स भी ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं, किस टाइम पे डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज होना चाहिए इंटेस्टाइन में, किस टाइम पे उसको शट डाउन होना चाहिए, ऐसे बहुत सारी रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स की जरूरत पड़ती है और यही इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन दिया जाता है। सो एज अ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंडिविजुअल, प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्रीज द डिफरेंट सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स become separated from each other by great distance. Obviously organs अलग-अलग हो गए, दूर हो गए हैं, तो distance का ये part of diffusion से तो simple अपना material exchange या communication नहीं कर सकते। So there has to be some mechanism to ensure that they all are well coordinated to do a complete life process. So वही हम यहाँ पे देख रहे हैं, thus it becomes necessary to have a system by which the different parts of the organisms can function as a single unit. So this is possible only if, how is it possible? Only if the single unit अगर उसको work out करना है, it is possible only if different parts can coordinate with each other and carry out a particular function. To carry out this simple function such as picking up an object from the ground, there has to be coordination of eyes, hands, legs and vertebrae. So you can imagine कि इतनी सारी हमारी life activities होती है, तो उन सब पे बहुत जरूरी है कि कोऑर्डिनेशन बना रहे। The eyes have to focus on the object, the hands have to pick up and grasp the article, the legs have to bend, and so does the backbone. So all these actions have to be coordinated in such a manner that they follow a particular sequence and the action is completed. So a similar mechanism is also needed for internal functions of the body. जैसे कि मैंने आपको बताया, simplest example digestion, या किस टाइप की क्या डाइट ले रहे हैं, किस तरह का डाइट आप खा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, एंजाइम्स रिलीज होंगे। That is all because of coordination. So the individuals also have to adjust to the changing conditions around them and vary their responses. At the same time, the internal conditions of the body should be maintained constant. This is homeostasis. तो आपके पास एक नया आता है टर्म होम्योस्टेसिस।
So homeostasis means a balance. Balance of what? The balance of the intracellular and extracellular environment. सेल के अंदर, सेल के बाहर किस तरह से पैरामीटर्स होने चाहिए, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंटेंट कितना होना चाहिए, क्या कम ज्यादा हो रहा है, क्या सोडियम बढ़ रहा है, पोटेशियम बढ़ रहा है, व्हाटएवर जिस भी चीज किसी भी तरह के आयन सॉल्ट्स की अगर हम बात करें तो अगर उसका मेंटेनेंस, पानी कितना हमने पिया है आज और कितना उसको यूरिन आउटपुट चाहिए, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें होमोस्टेसिस का पार्ट होती है. सो होमोस्टेसिस इज डिराइव्ड फ्रॉम homeo word, मतलब same, and stasis means standing still. The internal conditions of the body are maintained at a constant by controlling the physiology of the organism. Just as in animals, plants also have to control and coordinate their various functions. Plants की बात करें, animals की बात करें, animals में higher organisms की बात करें, lower organisms की बात करें, more or less same. न्यूरल सिस्टम एक बात हमें ध्यान रखनी है, इस कंटेंट में डेफिनेटली हमने इसमें प्ले कंटेंट्स की, तो अगर आप मेरे पर्सनल मॉड्यूल्स वगैरह देखोगे, मेरा बनाया हुआ कंटेंट जब भी रिफ्लेक्ट होता है आपको मॉड्यूल के फॉर्म में मिलता है उसके फॉर्म में, तो उसमें हमने वर्ड यूज किया है न्यूरल, राइट. दिस इज न्यूरल. So what is NEURAL? Neural is now the latest word for which has been replaced the word nervous. So nervous system या neural system of an animal is composed of, it is neural tissue. Neural tissue is made up of several other types of tissues. So अगर आपको उन टिश्यूज के बारे में जानना है, मेरे प्रीवियस वीडियोस एनिमल टिश्यू वाला जो था फाउंडेशन डे, उसको आप ध्यान से सुनिए. उसमें आप देखोगे कि एनिमल टिश्यूज में कितने तरह के सेल्स होते हैं, वो सब उसमें दिया हुआ है. Specialized cells for neurons or nerve cells which can detect, receive and transmit different kinds of stimuli. Nerve fibers which are certain bundles or extended process of nerve cells. जैसे nerve fibers होंगे तभी हम आपको nerve cell जिसे न्यूरॉन कहते हैं, it is the structural and functional unit. Structural and functional unit of neural system कहा जाता है. फंक्शनल यूनिट कहा जाता है और इसको बोलते हैं न्यूरॉन. It is neuron. NEURON. So neuron बोलते हैं, right? So like this. So nerve cells. So let's talk about the neurons in details. इसका structure पढ़ा जाए. जब उसका structure देखते हैं, we can see the nerve cells or the neurons are the structural and functional way that they are, and there are many numbers. There are large numbers, billions of nerve cells make up our brain. And you won't believe this neuron cell. It is one of the most differentiated. It is one of the highly differentiated cell, and it can reach up to several meters of length. So इसको काफी long distances manage करना है, communicate करना है. So you can see a neuron. And this is a diagram which can be asked in your boards also to draw, and otherwise they can give you scanned picture and ask you to label the important parts with its function. So this is a competition we have, like this is random direct question, and it is associated of which type of the tissues. Answer in neural tissue. या सबकंटेंट लॉन्गेस्ट प्रोसेस किसे कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं. इसके टर्मिनल इनको नर्व एंडिंग्स कहते हैं. सिनेप्स कैसे बनता है, तो ये छोटी छोटी चीजों पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो अब हम बात करेंगे इसकी माइन्यूशन पे भी क्वेश्चंस आते हैं. सो लेट्स सी एक न्यूरॉन का क्या है. इसमें पोलैरिटी है. व्हाट इज हैज, इट हैज पोलैरिटी. व्हाट इज पोलैरिटी? लेट्स टॉक अबाउट पोलैरिटी. किसे कहते हैं, राइट? So polarity means जब हम देखते हैं कि जो न्यूरल सिस्टम है इसके अंदर, राइट, न्यूरल सिस्टम के अंदर, when we see that it has outgoing and incoming content. मतलब इसके पास एक ऐसा पैसेज क्रिएट हुआ है जैसे इसमें तो मैसेजेस है. The messages are coming from a particular end, incoming end, and exit from the other end. तो जो incoming end है उसको बोलते हैं efferent end. ऐसे याद रख सकते हो, आ रहा है, efferent आ रहा है, मतलब वहां से मैसेज आ रहा है. This is efferent end, right?
that is efferent end. इस तरह से that is efferent end, E double F E R E N D, efferent end, यहाँ से सिग्नल्स जा रहा है। तो नाउ efferent end जो होता है इसको कहते हैं डेंड्राइट्स, इसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। और इसमें जो डेंस पार्टिकल्स होंगे, यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, ये बनाया जाता है इसका एनवायरनमेंट, इसके उसमें राइबोसोम्स के बनते हैं। This is granules. They are making neurotransmitters. Neurotransmitters are important chemicals. तो इनको बोलते हैं neurotransmitters. Neurotransmitters. Nucleus हो जाता है the center. So nucleus is a control center for the cell body. तो आप देख सकते हो उसकी cell body वाला जो हिस्सा है, so it has like a cell body, ये पूरा एक cell body है इसका, right? And it has, just a minute, it has a cell body. Okay, then it has a longest process which is known as axon, and it has terminal branches. इस तरह से इसके तीन हिस्से हो जाते हैं। तो जो सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ग्रैन्यूल्स और डेंड्राइटिक एंड आप देख सकते हैं। और इसका जो लॉन्गेस्ट प्रोसेस है दैट इज एक्सॉन, राइट? यहाँ से मैसेज ट्रैवल करता है और इसमें एक स्पेशल टाइप की शीट होती है जिसे कहते हैं माइलिन शीट। तुम क्या बोलेंगे उस शीट को? माइलिन शीट। दिस इज अ माइलिन शीट, ठीक है? माइलिन शीट स्पेशली जो सेल्स बनाते हैं, अगर वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है तो वो है श्वान सेल्स, एंड अगर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स है, तो वो बनाया जाता है बाय ओलिगोडेंड्राइटिक सेल्स। ओलिगोडेंड्राइटिक सेल्स, दैट इज इन CNS। ठीक है, तो अब एक्सॉन की बात करें तो एक्सॉन में जो है माइलिन शीट दैट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स। और इससे क्या होता है कि ये एक तरह से इसमें वो दे देता है इंसुलेशन, राइट? सो नोड ऑफ रैनवीर आर दोस पॉइंट्स जहां पे माइलिन शीट कवर करना एक्सॉन को कवर रह गया है उसका। तो एक्सॉन पे जहां जहां माइलिन शीट कवर रहना चाहती है, which is very minute spot, those structures are periodically arranged and that is node of Ranvier। इसी पे ही न्यूरॉन्स का मैसेज ट्रैवल करता है। देन न्यूरी लेमा एक यहाँ पे आया हुआ है, न्यूरी लेमा। तो न्यूरी लेमा क्या होता है? जो श्वान सेल्स होते हैं, जैसे ये श्वान सेल है तो ये इसका न्यूक्लियस है, तो इसकी जो कवरिंग होती है दैट इज न्यूरी लेमा, राइट? इस तरह से तो श्वान सेल होगा, इसके ऊपर होगा, मैं आपको इसे एक स्क्रीनशॉट लेकर, लाइक सपोज दिस इज द एक्सॉन, ठीक है? अब यहाँ पर एक श्वान सेल है, ये इसका न्यूरी लेमा, इसकी मेम्ब्रेन का नाम है, राइट? अब ये माइलिन शीट बनाना शुरू कर, तो ये माइलिन शीट बनाएगा तो इस तरह से एक बनाया, दूसरे श्वान सेल ने दूसरे पे बनाया, ऐसे बैंगल्स की तरह लगेगा, जैसे किसी ने बहुत सारे हाथ में बैंगल से रैप कर रखा है, वायर वाला थिन बैंगल से रैप कर। तो ये है। अब डेफिनेटली इसका जो न्यूक्लियस होगा हर एक का, वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड होगा और उसका न्यूरी लेमा भी बाहर की तरफ होगा, ऐसे। जैसे ये वाला आफ्टर मॉडिफिकेशन ऐसे दिखेगा, ये वाला भी कुछ ऐसे दिखेगा, इस तरह से। इसका न्यूक्लियस श्वान सेल, दिस इज माइलिन शीट फॉर्मेशन। और जहां आपके नहीं बना है, जैसे यहाँ पर इस पे लोकेशन पे दोनों तरफ एक्सॉन के, जहां पर माइलिन शीट नहीं कवर कर पाएंगे उसको एक्सॉन को, उसको हम कहते हैं नोड ऑफ रैनवीर, राइट? तो ये नोड ऑफ रैनवीर है जहां आयोनिक एक्सचेंज हो सकता है, यानी कि इंपल्स ट्रैवल कर सकता है, करंट फ्लो कर सकता है। तो इसीलिए कुछ जब ये मूवमेंट करेगा, जब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स का मूवमेंट होगा लाइक दिस,
ये सपोज डेंड्राइट वाला हिस्सा है और ये नर्व एंडिंग वाला हिस्सा हो गया, राइट। तो यहाँ पर हम ये एफरेंट भी लिख सकते हैं और ये इफरेंट एंड हो गया, दैट इज द एग्जिट एंड, और ये आने वाला एफरेंट है। तो अगर ये दो माइलिन शीट मैं ऐसे बनाऊं इस पर, तो दोनों तरफ से है इसमें से माइलिन शीट पूरे एक्सॉन को कवर कर रहा है लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो माइलिन शीट्स है, ये दो माइलिन शीट है, इन दोनों के बीच में जो गैप्स है उसको हम क्या बोलते हैं, जिसमें आपको बताया, दैट इज नोन एज नोड ऑफ रेनवीट। तो इसमें यहाँ पर भी हम कैन सी द नोड ऑफ रेनवीट जो होता है बेसिकली दैट इज यहाँ पर और यहाँ पर, दैट इज नोड ऑफ रेनवीट। इसी पे भी नर्व एंडिंग्स ट्रैवल करते हैं। Wait, I'll write it here. So now the nerve impulse will travel. Starting from here, it will directly jump on each and every node and will only. तो इस तरह की जो कंडक्शन होती है फाइनली ये सिनेप्स को रीच करता है, इसको हम कहते हैं सॉलिडेटरी कंडक्शन, ठीक है। वी कॉल इट solitary conduction. Solitary conduction of nerve impulse. So this is how the speed of the nerve impulse becomes faster. Next. So let's come back to the same diagram. यहाँ पर हम इस तरह देख सकते हैं कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा है। टर्मिनल ब्रांचिंग जहाँ पर नर्व बंडल्स जो है बंडल काफी उसकी ब्रांचेस 5 ब्रांचिंग करते हैं and they take part in thousands of synapses. तो जैसे डेंड्राइट में भी आपने देखा बहुत सारी ब्रांचिंग है, इसमें भी तो it is head to tail arrangement of each and every neuron cells and thus it makes a head to tail arrangement. So every head and tail of each two paired neuron makes the synapse. So there are thousands of synapses between two neurons, right? Remember it. Next, after this, we will talk about the cell body. You can see dendrites, axon, and then the distal branches. उसमें दो तरह के nerves हमने देखा, एक में node of Ranvier है जिसमें myelin sheath है और एक दो smooth वाले भी होते हैं short length, इनको आसपास ही बहुत से nearest communication करना पड़ता है, उनको बहुत fast run नहीं कराना impulse को, तो उस केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले न्यूरॉन्स का जो ट्रैक होता है उसमें माइलिन शीट नहीं दी जाती है, सो दैट्स द स्पीड इज क्वाइट नॉर्मल एंड एज कंपेयर्ड टू सॉलिडेशन जो वेरी फास्ट, इस पे लॉन्ग ट्रैवल करना है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीट दो तरह के होते हैं, दैट इज माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। माइलिन और मेटिलेटेड बिकॉज ऑफ द लिपिड व्हाइट कलर का दिखता है, इसको व्हाइट मैटर ऑफ द ब्रेन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी बोला जाता है। और एक होता है नॉन माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड में माइलिन की कवरिंग नहीं है, सो दैट्स व्हाई दे आर अपीयर ग्रे ग्रेइश, उसको ग्रे मैटर कहते हैं। So like this we can see the two types of neuron cells. Then we have the types of neurons based on its polarity. तो polarity के बेस पर types में unipolar है, bipolar है, multipolars होते हैं। तो जो यूनिपोलर न्यूरॉन्स है उसका क्या फंक्शन है, यूनिपोलर एम्ब्रियोनिक सिस्टम में पाए जाते हैं, एग्जिस्ट नहीं करता ये आफ्टर बर्थ, ये बेटर डेवलप हो जाता है एंड सो दैट्स हाउ यू सी इट। बाइपोलर न्यूरॉन्स से ज्यादा कॉम्पिटिशन क्वेश्चंस आ रहे थे। बाइपोलर न्यूरॉन होता है जिसमें you can see only two polarities and it is seen in the retina of the eyes and olfactory epithelium in the nose. So where will you find it? So let's write it down. It is found in the bipolar one. It is found in the retina of eyes. And inside the nose in the olfactory epithelium.
in the nose, right? In the nose part. Bipolar. Next we come to the multipolar. मल्टीपोलर जो होते हैं न्यूरॉन्स इसमें बहुत सारे फैंसी डेंड्राइट्स आते हैं सो दैट्स व्हाई इट हैज मल्टीपल पोलैरिटी एफरेंट और ईफ्रेंट के बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं इसको ठीक है ईफ्रेंट में भी सिनेप्स बनेगा काफी ब्रांचिंग है सो दिस मल्टीपोलर बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द एनिमल किंगडम हैव मल्टीपोलर एक होता है एपोलर एपोलर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो काफी बिगिनिंग स्टेज होती है एवोल्यूशन वहीं से स्टार्ट हुआ सेल न्यूरॉन बनने की जो टेंडेंसी थी वहीं से शुरू हुई नर्व नेट्स से बने हाइड्रा से तो हाइड्रा का नर्व नेट एपोलर तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं मल्टीपोलर नर्व इंपल्स क्या होता है नाउ लेट्स टॉक अबाउट नर्व इंपल्स इसके लिए आपको सिनेप्स पढ़ना पड़ता है सिनेप्स क्या होता है तो दो न्यूरॉन्स के बीच में एक कम्युनिकेशन होती है और एक न्यूरॉन अगले न्यूरॉन को वो मैसेज ट्रांसफर कर रहा है तो उस फंक्शनल फिजियोलॉजिकल यूनिट को सिनेप्स कहते हैं so it is the dendrite and the synaptic nerve of the axons of the neighboring neurons are in the physical contact with one another without fusion they don't leave a gap between them इसको synaptic मैं आपको अभी दिखा देती हूँ उसको क्या बोलते हैं synaptic इसमें ड्रॉ करके दिखा देती हूँ that is synaptic cleft like this is a synapse अगर हम बात करें तो एक synapse इधर है और एक synapse का नेक्स्ट जो न्यूरॉन है वो ऐसे ड्रॉ होगा राइट तो इट इज प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन and the other one is post synaptic neuron right this post synaptic neuron इधर के बीच में जो गैप है दिस गैप इज देयर दैट इज सिनेप्टिक क्लेफ्ट और आपको ये ध्यान रखना है कि इसके पास जब इंपल्स ट्रैवल करता है तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है तो करंट में हमने क्या बनाया अगर वायर बीच में से काट दें तो फिर करंट फ्लो बंद हो जाएगा सर्किट ब्रेक हो जाएगा एग्जैक्टली यहाँ पे भी सर्किट ब्रेक होता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जहाँ पे इंपल्स कैन नॉट ट्रैवल इन इट्स इलेक्ट्रिकल फॉर्म यहाँ पर वो केमिकल फॉर्मेट में ही हो जाता है कन्वर्ट So this message converts into chemical form, right? So how it is converted into chemical form that I am showing here. So you can see that in the synaptic cleft, यहाँ पर there is a role play of neurotransmitters. So there are neurotransmitters inside the vesicles. The most common neurotransmitter is acetylcholine, right? So it's a chemical acetylcholine formed by the it is formed by the Nissel's granules and then it travels. It fuse hota hai, it fuses with the membrane and its exocytosis. और अगले वाले पोस्ट सिनेप्स पे उसका रिसेप्टर है तो रिसेप्टर होने की वजह से क्या होगा जब इस पे रिसेप्टर्स है इस तरह से ठीक है तो ये न्यूरोट्रांसमीटर उस पास जाके अटैच हो जाते हैं सो देयर इज सम चेंजेस आयोनिक गेट्स का चेंज होता है और इसमें भी फिर आयोनिक इनफ्लक्स आउटफ्लक्स शुरू हो जाता है ये भी करंट फ्लो हो जाता है तो इस तरह से जो यहाँ पे करंट सिनेप्टिक क्लेफ्ट में ब्रेक हो गया है ड्यू टू few nanometer of difference so that's why neurotransmitter release होकर इस मैसेज को कंटिन्यू करवाता है so it's a quite a fast process इसको केमिकल सिनेप्स कहते हैं क्योंकि इसमें केमिकल कंपाउंड न्यूरोट्रांसमीटर यूज हुआ है इसलिए इसको बोलते हैं केमिकल सिनेप्स right this is chemical synapse so pre-synaptic neuron post-synaptic neuron के बीच में synaptic cleft इस तरह से तो एक यूनिट हुआ सिनेप्स ऐसे हजारों यूनिट्स बनती हैं बिकॉज़ देयर आर एक्सोनल एंड के बहुत सारे एक्सोन्स का एंड है प्री सिनेप्टिक नर्व बहुत सारे हैं और अगले न्यूरॉन का जो हेड है डेंड्राइट उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं प्री पोस्ट सिनेप्टिक के तो प्री एंड पोस्ट बहुत सारे होने की वजह से थाउजेंड्स ऑफ सिनेप्सेस का वर्क शुरू होता है एंड दैट्स हाउ दे ट्रांसफर द मैसेजेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट ठीक है इसमें न्यूरोट्रांसमीटर का रोल प्ले है एंड कुछ आयंस का है particularly sodium ions and calcium ions that you study in the higher classes so after discussing this part now we come to the next that is
So nerve impulse. So what is a nerve impulse? जो current flow होता है, जो current flow होता है from pre to post through the synaptic cleft, उसी current को nerve impulse कहते हैं. The conduction of stimuli by the nerve cells is nerve impulse, and the dendrites will receive the stimuli from the receptors, sense organs, and conduct the same as electrical impulse to the axon through the cytosol. इससे flow बनता रहता है. At the synapse, synaptic nodes होते हैं, जिसको मैंने आपको और लेबल किया further, pre-synaptic node, post-synaptic node, and the space synaptic cleft. It releases out chemical substances called as neurotransmitter. The most common is acetylcholine, and उसको आप short में ACH पे लिख सकते हैं, capital A, small c, small h, which converts the electrical impulse into chemical and passes to the neighboring neurons. Now, what are the types of neurons? Types of neurons on the basis of क्यों किस direction में message को move करा रहे, travel करते हैं. Sensory हो गया, motor हो गया, association भी. तो तीन तरह के होते हैं. Sensory neurons वो होते हैं जो sense organs के साथ. आपको पहले देख लेते हैं sense organs. It is nose, ear, tongue, skin, right? So that's how it is. The types of sensory structures, eyes. So these neurons receive signals from a sense organ and give it to the central nervous system. Motor neurons, they are the ones कि जो भी message brain या spinal cord में decide किया, जो भी sense किया, उससे क्या decision है. आप कुछ देख रहे हो तो आपको वो चीज पे focus करना है या आपको divert करना है, वो decision brain ने लिया. तो उस case में motor neurons helps, right? So these neurons send the signals to the muscle or a gland what to do next. So association neurons होते हैं जो इनके बीच में connectors का काम करते हैं. These neurons relay the signals between sensory and motor. इसका switch on का जो है मतलब sensory to motor, motor to sensory, इसके बीच में association neurons का काफी योगदान रहता है. Next is pathway from stimulus to response, right? And so it is afferent. So what is afferent? मतलब आया, message आ रहा है. So in the holding stick activity, you observe there is a coordination between eye and the fingers. So different pathways are taken by the nerves to bring out this coordinated activity. So on the basis of pathways followed, nerves are classified mainly into three different types. So afferent neurons are there. You can see here the afferent that is moving towards, carry the messages towards the CNS. Spinal cord of the brain are the two CNS, and from nerve endings on the muscles of different sense organs that sense the change in the surroundings are called stimulus detectors. These are also called sensory nerves. So sensory nerves, you can see there that वो detect कर रहा है और message को CNS तक पहुंचाता है. Efferent neurons कौन होते हैं? Phenomena which carry the messages from the CNS to parts that shall carry out the response. So response दो रूप करते हैं. Muscles, अब वो चाहे आपका voluntary muscle हो या involuntary, वो आप muscle tissue वाले चैप्टर में भी देख सकते हैं. So effectors जो होते हैं वो muscle या glands होते हैं. Glands would be exocrine, endocrine glands. So they are also called motor nerves. And the third is association nerves, that which link together the afferent and the efferent nerve fibers. More or less same. So this is how, it's a cycle. Different nerve pathways are given in this particular flowchart. You can use it for your notes making as well and presentation. Because let's say help, right? Afferent and efferent. And the next is, after this we will talk about different nerve pathways. So ये यहाँ पे है CNS, central nervous system, spinal cord है, brain भी है, और एक होता है peripheral. तो central nervous system में कौन कौन होगा? Central nervous system में आएगा brain and spinal cord, और peripheral में वो सारे nerve fibers जो brain से और spinal cord से originate होते हैं, that is known as CNS, cranial nerve fibers, and spinal nerve fibers. So cranial fibers and spinal nerve fibers, they are making the peripheral nervous system. So they're going to each and every living tissues of the cells, of the organ system, just to have a well coordinated response. So to get the message, so any dead part, their nerve supply is not there, but all the living parts of the body, जो भी respond करता है, उस पे animal world का
और स्पेशली कॉम्प्लेक्स एनिमल वर्ल्ड धीरे धीरे ये कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप हुई है. So उसमें mammals में highest complexity देखते हैं because of the evolution of the brain. So यहाँ पर हम देखते हैं central nervous system, neural system, this is brain and spinal cord, and they are having some nerve fibers which are connecting the entire neural length. ठीक है, पूरी वायरिंग हुई है, तो ये है neural system. So relationship between the different kinds of neurons you can see here. तो afferent sensory neurons कौन कैसे work out करता है? The receptor से, they will take the message to the central part, and this is how it is. The effector cell body का message यहाँ से शुरू होगा, ये लेके जाएगा motor effector organ muscle या glands पर. इस तरह से CNS and PNS they are well coordinated. So humans के अंदर अगर हम बात करें तो humans में हमारे पास definitely it is central nervous system and peripheral nervous system. So let's see its classification. मैं आपको इसकी क्लासिफिकेशन बता देती हूँ. Right. So human neural system has two major divisions. That is CNS, central nervous system or neural system, which again has two divisions. That is the brain and spinal cord. Whereas the other side, that is peripheral neural system, अगर हम बात करें structure, मतलब structure wise किसका बना हुआ है? तो let's see the structure wise formation. एक होता है functional, that is functional ones. So just wait. Right. So we have this as a functional. Functional part as well as structural. अगर हम structure wise बात करते हैं, right? Structure wise बात करें, so it is made up of those cranial nerves and spinal nerves. Cranial nerves, 12 pairs. अगर हम humans को ही देखें, ठीक है, there are 12 pairs of cranial nerves, whereas spinal nerves are there. That is 31. It is 31 pairs. 31 pairs. Functionally, it is either it is somatic, मतलब कहाँ पे innervate हो रहा है, इसका मतलब positioning कहाँ पर है. So on that basis, it is somatic neural system, right? Somatic, and एक होता है autonomic neural system. So ANS as well as PNS. So जो SNS है, जब इसमें SNS है, somatic neural system, it is innervating to the muscles one, and the ANS, autonomic neural system, it is having two again things to work upon, two parameters, whether the body is in an emergency condition or it is in a relaxing condition. So in that case, it is having two working method, sympathetic and parasympathetic. ठीक है, और ये वाला होगा parasympathetic. So sympathetic and parasympathetic. इस तरह से पूरा एक स्ट्रक्चर जो हमारा एक फ्लो चार्ट है वो तैयार होता है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बेसिस पर CNS and PNS. So brain and spinal cord has its own classes. PNS में पहले हम इसको स्ट्रक्चर वाइज बताते हैं, cranial and spinal nerves को verbally बताया जाता है. बाकी ANS को हम ज्यादा डिटेल में समझाते हैं और SNS में हम आपको रिफ्लेक्स एक्शंस भी बताते हैं. तो sympathetic and parasympathetic. Basically जो SNS है somatic, वो skeletal muscles का हिस्सा होता है, तो वहां पर it ensures कि कैसे movement possible होती है, और especially एक spinal cord का reflex arc बनता है, वो होता है involuntary condition when the body is preparing itself for emergencies, right? So after this we will see the other parameters. एक मिनट, मैं आपको दूसरे स्क्रीन शेयर पर ले चलती हूँ. Right. So it is this one.
So SNS, somatic neural, responsible for conscious perception and voluntary motor responses, or involuntary वाले cases में parasympathetic nerves. Next, if we talk about the ANS, so this is how you can see this flowchart and remember and recollect that brain is a part of CNS, and then spinal cord is also part of central nervous system. So brain is for perception and processing of sensory stimuli, somatic as well as autonomic दोनों देखेगा. Overall पूरी body के सारे messages को definitely इस तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि memory भी develop होनी होगी past experience की. Execution of voluntary motor responses, regulation of homeostatic mechanisms, that is autonomic control. Spinal cord, initiation of reflexes from the ventral side, somatic, and lateral horn, जिसे बोलेंगे autonomic gray matter. वो मैं आपको जब reflex action वाली class होगी उसमें आपको explain होगा with diagram. Pathways for sensory and motor functions between periphery and brain, somatic and autonomic. इसमें से आप nerves की अगर बात करें तो है PNS, fiber of sensory and motor nerves, somatic और autonomic दोनों हैं. And you can see बीच में कुछ nodes बने हुए हैं उसको ganglions कहते हैं. So that is also part of PNS. They are the centers of exchange and communication between thousands of neurons together. So reception of sensory stimuli by dorsal root and cranial ganglion, somatic or autonomic, दोनों का coordination होगा. Relay of visceral motor responses by autonomic ganglions. Then this is another one, especially in elementary canal में कहते हैं major part हमारा neural system का situated है. So that's a fact. Gut पे बहुत ज़्यादा इसका है. That is ENS. That is enteric neural system. This is also there, which you study in 11th class in details. When you talk about the histology of gut, उसमें हम दो तरह के plexus पढ़ाते हैं. Meissner's plexus and Corbett's plexus. तो उसमें इसका detail आता है. It is located in the digestive tract. किस टाइम में कौन सा local hormone release होगा और enzymes की activity को regulate किया जाता है. It is responsible for autonomic function and can operate independently of the brain and the spinal cord. So as जैसे food peristalsis travel करता है वैसे वैसे इस particular area में ये trigger करता है digestive secretions, which is very interesting to understand. तो इस तरह से हमारे body में neural system दो हिस्सों में divided है. इसके बाद जो further class होगी उसमें हम पढ़ेंगे brain का structure, spinal cord का structure with its functions, right? And autonomic neural system का भी function वो हमारी next class में continue होगा, right? So till then you revise the content and do the DPPs shared in a group. All right, bye.